Never change your mind just to please a woman. In this video, I'm going to discuss why you should not change your decision or opinions solely to appease or to satisfy a woman. Hi guys, my name is Udit Sharma. This channel is dedicated to helping men become the best version of themselves through personal growth and self-improvement. As a man, I want you to be the best version of yourself, the unbreakable version of yourself. If you are new here, make sure to subscribe my channel and share this video to your friends and to your loved ones. अगर तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि लाइक उदय तेरा चैनल तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, देन वाई यू आर मेकिंग वीडियोज ऑन लाइक वुमेन एंड ऑल. यू नो व्हाट, आई गेस यू आर ब्रेन वॉश्ड, राइट ब्रदर? तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखा दिया गया है वुमेन आर दिस, वुमेन आर दैट, ऑल दैट, बट इन रियलिटी talking to women and have a beautiful feminine woman by your side is a part of your self-improvement journey. There's no bullshit. I mean, yeah, obviously there's a bullshit online, like saying like talking to women is like, oh, it's just like it's haram, no, just don't talk to women. तुम्हें बहुत लोग बोलेंगे, oh man, just like don't talk to women, just focus on yourself and all. बुलशिट. बट अगर हाँ, तुम्हारा अगर पास्ट ऐसा रह चुका है कि लाइक यू हैव बीन विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड नाउ यू आर सेइंग लाइक आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, देन आई वुड से जस्ट लाइक गो फॉर इट. फॉर 1 year 2 years straight, put your head down and grind. Just then I guess for you woman is a distraction. But for those guys who are saying like तुम इंस्टा पे लाइक रील्स देखकर आ गए अल्फा मेल की, एंड नाउ यू आर सेइंग लाइक आई डोंट नीड अ वुमन बिकॉज लाइक आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ. डोंट बुलशिट योरसेल्फ. द रीज़न यू आर सेइंग दिस इज बिकॉज यू डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू अ वुमन. You don't even know how to approach and like talk to a woman. Don't bullshit yourself, brother, and don't suggest दूसरे को कि like you don't need a woman because like I guess you need to focus on yourself and all that bullshit. तो मैं like Instagram पे बता दिया वही चीज़, like you are saying brainwashed. So why you should not change your decision or opinions just to please a woman. अब होता है ये बेसिकली कि suppose अब I'm not saying like don't listen to your woman या फिर don't listen to your woman at all. No, you should listen to your woman and then go with your decision, then make your own decision. I'm not saying just like don't listen to your woman, but तब भी like if you go with your woman suggestion ना, हो गए कि लाइक सपोज लाइक तुमने वुमेन सजेशन पे काम किया, तुमने उसके सजेशन पे लाइक वही डिसीजन लिया. सपोज चीज़ें डोंट वर्क आउट, जस्ट सपोज चीज़ें डोंट वर्क आउट, व्हाट्स गोना हैपन इज शी विल नॉट ट्रस्ट योर मैस्कुलिन कोर. शी विल नॉट गोना लाइक ट्रस्ट योर कोर, योर मैस्कुलिन कोर. शी विल गोना थिंक लाइक शी विल फील योर लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी कि लाइक एज ए मैस्कुलिन मैन you're not even like responsible for your own decision, your own opinions. Yeah, I agree. उसने ही कहा था like तुम्हें decision लेने के लिए, but you don't even know like what a feminine woman is. She will gonna say it again and again कि like ये decision पे लो या फिर ये decision लो या फिर ये opinion या फिर वो opinion. Just don't listen. Just don't. अगर like तुम्हारी like obviously if your woman is saying like go with this decision, but deep down if you feel that another decision is much better, your decision is much better, then go for it. Just don't overthink. Don't even think like oh I deny her suggestion, what if like अब चीज़ें हम दोनों के बीच में सही नहीं हो पाएंगी. Nothing's gonna happen bro, relax जी. Nothing's gonna happen. वो कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें. Even कि she will gonna trust you, even कि she will gonna trust your masculine core कि like वो feel होगा उससे कि like she will feel like your authenticity कि like you are true to yourself. Authenticity means obviously कि like you are true to yourself.
तुम अपने डिसीजन पे चल रहे हो, तुम अपने ओपिनियंस पे चल रहे हो। और अगर तुमने वो चीज़ नहीं की ना, तुमने अगर अपने डिसीजन पे नई चीज़ ली, वट एवर इट इज़, डिसीजन कुछ भी हो सकता है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, यू वॉन्ट टू लाइक ऑब्वियसली लाइक वॉन्ट लाइक स्टडी, जो भी है, कोई भी डिसीजन हो, जस्ट मेक योर ओन डिसीजन। डोंट लिसन टू योर वुमन, आई मीन उसके सजेशंस, जस्ट डोंट। नथिंग्स गोना हैपन, वो कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें, इवन कि शी विल गोना ट्रस्ट यू। इवन कि मैं बोलूँगा जो ट्रस्ट होगा वो आई गेस और इंक्रीज होगा। एंड सपोज इफ़ यू गो विद योर वुमेन सजेशन ना, your woman still gonna love you, but she will not gonna trust you, since you don't even trust your own core. अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज तुमने जो अपने डिसीजन लिए, तुमने जो अपने डिसीजन पे लाइक तुमने लाइक काम किया, सपोज इफ़ यू फेल्ड, सपोज लाइक तुम्हारे डिसीजन पे चीज़ नहीं हो पाई, इट्स ओके, it's completely okay to fail, but get up. It's okay if you fail. You have to say to yourself, it's if I failed, I learn from it. I grow from it. You have to say these words to your woman. She will feel authenticity. She will like trust you. Even के लिए जो trust होगा वो like मैं बोलूँगा और बढ़ जाएगा. Just don't say these words like women are this, women are that, bro. Oh man, just kinda try to understand. Women are not a distraction. Woman is a gift. पर तुम्हें treat करना नहीं आ रहा उन्हें, तुम्हें praise करना नहीं आता एक woman को. That's why you are saying this. अब obviously आता है, I'm making this video just cause कि like I want कि तुम अपने decision पे चलो. Just don't listen to anybody else. Don't listen to your woman. Don't listen to your woman's suggestion. Don't listen to like anybody else's suggestions. Just go all in and try to focus on yourself all the time. All the time. Nothing's gonna happen. If you failed, just learn from it and grow from it. You have to say these words to yourself and to your woman as well. I hope this video helps you. I try my best कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि like how to praise your woman, how to praise your woman simply. I hope this video helps you. I'll see you in the next one. Bye. Take care.